Hi everyone and welcome back, and if you're new here then hi, I'm Shreya and this video is going to be a pack with me. Precisely a chaotic pack with me. So I'm traveling to Goa with my family for a family vacation और अभी तक मैंने बिल्कुल भी packing नहीं करी है. I'm kind of panicking because I'm running very late. The situation is bad. Like I'll show you. I mean, this is the mess and I don't know, like I think I need to just stop blabbering and start. So let's go. This is the current condition of my bed, and I mean this is so ironic because my last vlog was about keeping it all organized and nice and pretty, and here we are. अभी तक मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है जिससे कि मैं कुछ भूलूँ ना और सारी एसेंशियल्स रख लूँ. So the list is of first clothes and undergarment, then we have makeup and toiletry bag, then camera bag, comfortable slippers, chargers, hair tools, मतलब hair tools तो नहीं, मतलब I'm thinking I should take my straightener, and bro, like I was forgetting swimwear. Like I'm going to Goa and I was forgetting swimwear. Wow. My neck pillow, lenses and a notepad. This is so random but yeah. My god, the background is so bad. Anyways, हेलो. सो आई एम थिंकिंग मैं स्टार्ट करूँगी अपने मेकअप एंड टॉयलेटरी बैग से, एंड आई गॉट अ रियली नाइस किट फ्रॉम अमेजोन विच आई थिंक इज़ गोइंग टू बी प्रिटी हैंडी एंड बहुत हेल्पफुल होने वाला है. आई जस्ट शो यू इन अ वाइल. वेट. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. इसको ऐसे हैंग भी कर सकते हैं और इसमें आई थिंक मेरा सारा सामान भी आ जाएगा. ये काफ़ी छोटा लग रहा है बट इफ़ यू ओपन इट इज़ क्वाइट स्पेशियस. स्टार्ट करते हैं. अब इसके लिए भी मैंने एक लिस्ट बनाई है. एक्चुअली लिस्ट बनाई नहीं है, दिस इज फ्रॉम पिंटरेस्ट. आई हैव डाउनलोडेड अ पैकिंग एसेंशियल वाला लिस्ट. उसमें ऑलरेडी चीज़ें लिस्टेड होती हैं, सो इट्स रियली ईजी. सो इन दिस किट आई एम गोइंग टू पुट माई टूथब्रश, टूथपेस्ट, हैंड ब्रश, कोम, the list is long, nail filer or nail polish, hair ties, sunscreen and lip balm. So let's start. My bag is ready. Now let's move on to clothes, which is the most important part. तो मैंने कपड़े ऑलरेडी निकाल के रखे हैं. I just need to iron them and then pack it in the bag. So let's go. तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े दो सेक्शन में डिवाइड किए हैं. कुछ जो आयरन होने हैं और कुछ जो नहीं होने. I'm folding and keeping aside the clothes that are ready to be packed. So finally clothes are ready to be packed and this is my bag. I mean, considering how big it is and summer clothes are not that heavy, तो इसमें सारा सामान आ जाना चाहिए. Now let's go. And this is going to be my cabin bag. Wow. I thought ये मैं थोड़े से beaches पे भी ले जा सकती हूँ. So yeah, here it is. Okay, that was quick. So this is the bag. It's done. My clothes are ready and अभी भी बहुत सारा space है. I'm surprised. Okay, I just have to take a few essentials and then packing will be done. So let's go. So I don't want to carry a lot of footwear. एक तो मैं पहन के जाऊँगी and the second pair that I'm taking is this one. It is fully made of rubber, so I think it's perfect for beach. And this is some old polythene जो Amazon and इधर उधर से आता रहता है. So I've kept it and so इसमें डाल देते हैं. I completely forgot about accessories. मुझे अभी याद आया. And
मैंने कुछ पीसेस उठाए हैं जो मुझे लगता है सारे आउटफिट्स के साथ somehow चले जाएंगे. I'll show you. So I'm packing these very cute प्रॉपर हुप तो नहीं है बट हाँ हुप इयररिंग्स. मैंने बहुत सारे हुप्स लिए हैं, लाइक मेरे पास जितने भी हुप्स थे मैंने शायद सारे ले लिए हैं. एंड ऑल्सो आई हैव टेकन सम रियली क्यूट कलरफुल इयररिंग्स जो मैंने दिल्ली में आज तक नहीं पहने, बट आई एम होपिंग मैं वहाँ पे पहन लूँगी विद माई कलरफुल बीची आउटफिट्स. So this is the another one and I have this. It is so big. I think ये मेरे इस आउटफिट के साथ भी जा रहा है वैसे तो. See? बहुत बड़े हैं ये तो. Again a pair of silver hoops and again hoop earrings जो कि बहुत ही छोटे हैं, सबसे छोटे जो मुझे मार्केट में मिले, और ये मेरे पास तीनों कलर में है, लाइक गोल्डन, कॉपर एंड सिल्वर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम टेकिंग दिस रियली क्यूट बटरफ्लाई इयररिंग. दिस इज सो क्यूट. मुझे इसका दूसरा नहीं मिल रहा. आई नीड टू फाइंड दैट. ओह आई गॉट इट. Earrings हो गए हैं. Now I am also taking a few necklaces, like very cute dainty pieces, but सब कुछ इस box में है, so I don't want to open it right now. Then I'm thinking if I should take this. I mean it's like this. I mean it's so cute. It's giving me like full princess vibes. So I'm thinking I should take it. My sister bought this from Dubai and आई थिंक वो दुबई ब्लिंग देख के गई थी और वो वहाँ से मेरे लिए ये ब्लिंग लेके आई है. सो मच अप्रिशिएटेड. एंड शी ऑल्सो बॉट दीज 2 हेयर बैंड्स. वाओ, इसमें तो अभी तक टैग लगा हुआ है, बट सी अगेन दिस इज सो ब्लिंगी. वाओ, इट्स रेनिंग आउटसाइड. एंड तीसरा और आखिरी इज दिस वन. ब्रो आई एम लाइक सो कंफ्यूज्ड बिकॉज इट लुक्स क्यूट. इट लुक्स सुपर क्यूट. और सारे ले लूँ क्या? ओके ओके, सी this is so cute. I'm too confused. I'm thinking I should take all of these. सारे ले लेती हूँ, FOMO नहीं होगा. I'm taking a few watches. This is the first option. दूसरा वाला भी कहीं पर तो है and I'll be wearing it probably. So yeah. Then for accessories I have to take sunglasses. So I'm taking 2 pairs. I think 2 काफ़ी है. मैं वैसे भी पहनती नहीं हूँ sunglasses. So it's just for nice pictures. Wow. This is actually just for Instagram aesthetic, and then I have the next one which I will kind of wear if I feel like. Looks pretty cool. So sunglasses done. And for packing my accessories, again I'm using this bag जो सदियों पुराना Shein का bag है, like Shein. Shein has discontinued services in India for 3 years and I have their polythene packaging. Can you believe? Let's just keep everything. Few moments later. In another news, it is okay. It is raining here again. क्या हो रहा है ये? And it's raining like very heavily. Shit, it's lightning. 20 minutes later. Wow, I'm almost done and now just the cabin bag is left a little bit and then I can sleep peacefully. Later that same evening. So I think now I'm done. These are the final 2 bags that I'm taking. This one is the cabin bag and the check-in bag. So my whole checklist is done now and I am super happy and excited. If you had fun watching this video and if you really like this video, don't forget to actually like it, and I will see you in my next video in Goa. So bye.